Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. କୁଆଡେ ଗଲେ ସବୁ? ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କେତେ ଜଣ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲୁ? ହ୍ୟାଲୋ, Yes, sir. କେତେ ଜଣ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍? सर ମୁଁ କରିନଥିଲି। ଆଉ କିଏ? ମୁଁ କରିନଥିଲି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନଲିକା ବଳ, ସୁକନ୍ୟା କରିଥିଲ? सर ମୁଁ ବି କରିନଥିଲି। ଭେରି ଗୁଡ୍। କଣ ଆସିବେ ନା ନାଇଁ ପିଲା? ନା ଆରମ୍ଭ କରିବା? କଣ ବ୍ରଜେଶ୍ଵର, Yes, sir. କଣ ତମ ପିଲାମାନେ ସବୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? Sir, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ତମ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡେ Online ଗଲେ? online class ରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରିବି? ତୁ ଲିଡର ଟା ତାଙ୍କର, ମନିଟର ଅଫ ଦ କ୍ଲାସ। ସାହିଲ କୁଆଡେ ଗଲା? ଶୋଇ ପଡିଛି ବୋଧେ। ମୁଁ- ରୁଦ୍ର, ଦି ଜଣ ରୁଦ୍ର ନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଗୋଟେ ରୁଦ୍ର ଅଛି, ରାଉତ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ କ୍ଲାସରେ ସବୁ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ବ୍ୟାକଅପ ରେ କଣ ମାନେ ବାଟି ପିଆଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି, ତା ସହିତ ଟିକେ ରିଲେଟେଡ ଆଗକୁ ବଢିବା ହେଲା। ତଥାପି ଟିକେ ରିପିଟ କରିଦଉଛି, କେତେ ଜଣ ଜଏନ କରିଥିବ ନ କରିଥିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ବାୟଟ୍-ସାଭାର୍ଟସ୍ ଲ। ହେଲା, whenever there is a current carrying wire, so ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଯେମିତି ତାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଆମେ we calculated or derived, and there is a concept of electric field around a point charge, whether it is at rest or whether it is at motion. But as we know, the magnetic phenomena is concerned related to the charges at motion. So we can consider a current carrying wire or conductor. So we can consider a small element like ds is the small element, and what is the current element, that is a vector quantity, that is I into ds. So that is a vector quantity because this ds symbol is used, and the direction of ds you see here, I have given the arrow mark, that is in the direction of current, that small element. Okay. So, and if you want to calculate the magnetic field produced by this current carrying wire in the space, okay. So let us consider this point P,
and we want to calculate the magnetic field at this point P. So we can put the Biot-Savart's law, that is dB due to this small current carrying element, that is IDS, is equal to mu 0 by 4 pi IDS sine theta divided by r square, where theta is the angle between this unit vector, that is r cap. Okay, माने एटा जदि ए element ru a point जदि that is the distance is r, so what is the direction of this distance, that is r cap, माने unit vector हमें उटे जदि multiply कर दबा we can get the directional factor. Okay, so r is the distance, so ds cross r cap by r square. Okay, ds sin theta by r square माने ताको हमें we can simply put that is ds cross r cap, where r cap is a vector, ds is also a vector. Okay, but since r cap का magnitude 1 है, so यहाँ पे जब उसको मतलब एक्सपैंड करते हैं इस इक्वेशन को, सो आई डी एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, माने a क्रॉस b माने कोन ए बी साइन थीटा, सो सिमिलरली एठी हमें पुट करले, बट सिंस r cap is equal to 1, so we can simply simplify this formula, these two formulas, that is called Biot-Savart's law. dB का total integration over the whole element, current carrying element अगर करेंगे, so we'll find out the magnetic field, total magnetic field, that is mu 0 I by 4 pi ds cross r cap by r square. Although we developed the Biot-Savart's law for a current carrying wave, it is valid for current consisting of charges flowing through space. खाली जे मतलब एक करंट कैरिंग वायर में ही मतलब सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ऐसा जरूरी नहीं है, whenever we are considering an electron beam. ओके, जो हमारा जो टीवी स्क्रीन में ये सब में क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब यूज किया जाता है, वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इन स्पेस. ओके, इलेक्ट्रॉन बीम उसको बोलते हैं. सो इट ट्रेवल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो वो इलेक्ट्रॉन बीम के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू आउट द स्पेस. एंड इन दैट केस ये जो ds जो है, इसमें जैसे हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लिए, वैसे ही वी कैन कंसीडर दैट इन स्पेस द इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ के बीच में कितना स्पेस में है, सो दैट इज द ds डिस्टेंस. ओके, इतना स्पेस में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट इज कॉल्ड ds. So electric field created by a point charge is radial. What is the basic difference between electric field? It is in the calculate करते electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by r square. Similarly, it is for magnetic field, that is mu 0 I by 4 pi ds cross r cap by r square, where mu 0 कौन कहते mu 0 value कौन 4 pi into 10 to the power minus 7 टेस्ला कौन यूनिट को ब्रजेश्वर, टेस्ला मीटर बाय एम्पियर, मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर. ओके, this is called magnetic permeability, mu 0. The value is 4 pi into 10 to the power minus 7 Tesla meter divided by ampere. Okay, and similarly देखो r square, electric field is माने dependent upon the square of the distance, inverse square of distance, and magnetic field is also depending upon inverse square of distance. But what is the basic difference? This is similarity between electric and analogy. Okay, but what is the basic difference we are finding out? So electric field by a point charge is always radial. So suppose there is a point charge, the electric field is in all radial directions. Okay, so it upon the radial directions, whether it is attractive or repulsive, that is a separate case, but electric lines of force are always radial. But magnetic field created by a current element is perpendicular to both the length element ds and unit vector r cap. Okay, unit vector r cap as described below correspond. माने ds cross r cap रो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन टा होची मैग्नेटिक फील्ड, जेमति हमें मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करथिले, दैट इज q v क्रॉस b जो प्लेन को परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. सिमिलरली ids क्रॉस i, ये ids को अगर यहाँ पे हम लोग 4 उंगली राइट हैंड थंब्स रूल डालेंगे, सो IDS जिस तरफ डायरेक्शन में है उस तरफ में हमारा राइट हैंड का 4 उंगली रहेगा, एंड दैट वी
मैंने put our this R का direction है R cap, so the thumb का जो direction होगा that is into the page of the paper, माने नीचे side हो जाएगा, so that will be into the pen of the paper. Similarly, we calculated yesterday what is the magnetic field surrounding a thin straight conductor. So we took a straight conductor like this and we considered as very small element, that is ds, uska jo direction hai, that is this side, okay, and this ds element is at a distance r from this point p, that is at a perpendicular plane to the this straight current carrying conductor. So we need to calculate what is the magnetic field at this point P. So we have put Biot-Savart's law. तापर Biot-Savart's law इस integration इस करला परे. So finally we got this equation that is this is the equation, that is mu 0 I by 4 pi a cos theta 1 minus cos theta 2. It is the cos theta 2 eta hoji cos theta 1. So whenever we considered for a infinitely long straight conductor, conductor test, so let us consider it is very long. So in that case, this point P is a theta angle hai. So theta can be considered very negligible. Okay, that means 0, and this side theta 2 can be considered, that is 180 degree. So in that case, we find out this equation. This is for a finite conductor, remember. This formula is for a finite straight conductor, and this formula for an infinitely long current carrying straight conductor. What is the magnetic field produced due to a straight finite conductor, and what is the magnetic field produced due to a infinitely long straight conductor? Okay, so this is the formula. So mu 0 I by 2 pi a, where a is the perpendicular distance from the axis of this straight carrying conductor. Okay, so is your point P, wherever we are trying to calculate this magnetic field, so that is the say जो perpendicular distance टाइप हमें कहवा है. Okay, तापरे हाँ ये जो इक्वेशन टाइम में आमे जोटा मैग्नेटिक फील्ड एटा मैग्नीट्यूड रो जिनसटा हमें पाइले हैला गोटे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नीट्यूड टा केते at a perpendicular distance, I mean magnitude, we got the magnitude, but magnetic field is a what vector quantity, so we need to find out what is the direction. So by putting this right hand thumbs rule and all that notations, we can see that whenever there is a current carrying conductor like this, straight rod ta jaichi, so that is, let us consider that is a straight current carrying conductor. And whenever we from our right hand, if we put the thumb in the direction of the current, okay, if we put the thumb in the direction of the current and we curl our four fingers towards we hold the current carrying conductor like this, so what is the direction of magnetic field? So magnetic field is just like ये जो current carrying conductor जो straight conductor तार चारि पाखे एमती कौन करिवो से magnetic field तार develop होगा. Okay, so this is the direction of the magnetic field, that means circularly तार throughout the uniformly से कौन करिवो circular magnetic field गोटे create करिवो. And that magnetic field ये जो plane, this plane where the magnetic field is produced, so this magnetic field plane is perpendicular to the direction of current. Say जो जिनसटा मु एठी the difference रे कोन कहली. So this but although sorry, but the magnetic field created by a current element is perpendicular to both the length element and also the r cap as described by the cross product. So perpendicular to the length element, suppose 8 out a length element kimba total is the length of the conductor, so that is, but what is produced, the magnetic field produced is perpendicular to the length element. So this is the concept. Similarly, say same figure, this same figure I have drawn here also. So let this we can consider this cross symbol into the pen of the paper. Okay, so this cross symbol is the wire with current into the page.
So this is out of the page. So this figure is out of the page. So that is why whatever we are getting, the magnetic field का जो direction है, that is moving anti-clockwise. So but say if the current will be in opposite direction, ये जो magnetic field उसका surrounding में create होगा due to this current carrying element, so it will be what, circularly moving simply. Okay, so the यहाँ पे देखो this direction of arrow mark is like this, that means circularly moving. And for magnetic field strength decreases, इस फिगर से हम लोग को क्या मैसेज मिल रहा है? So this magnetic field decreases as the this radius of this concentric rings increases, or in other words we can say the magnetic field strength due to a current carrying, due to a straight current carrying wire or whatever decreases as the length, point of consideration where we are trying to find out the magnetic field, that is increasing. Okay, whenever the point of consideration, यहाँ पे अगर magnetic field हम लोग calculate करेंगे तो B का जो value है वो ज्यादा आएगा, that will be more. यहाँ पे करेंगे तो that will be less. Okay, because the distance from this whole setup is increasing. Okay, so similarly, what is the force between two parallel currents? ये कल हमने नहीं बोला है. So today we'll learn this one. So this is a basic question, generally comes in the examination by जो तुम्हारा जो क्या objective type ये सब में आता है. So force between two parallel currents. So let us consider, यहाँ पे जैसे हम लोग एक बस ये कंसिडर कर रहे थे, एक पर्टिकुलर रॉड के लिए बस वी कैलकुलेटेड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. सिमिलरली suppose there are two parallel straight carrying conductor, okay, and let us consider now the direction of current of these two conductors are same. Okay, and this distance between two parallel current carrying conductor is d. D is the distance. This d is the distance between two current carrying conductor. Okay, so what is the force due to one? What is the force or the magnetic field produced magnetic field produced by this a माने a conductor at this point? So let us consider आमे a point रे गोटे आमे magnetic field आमे calculate करिया पे चाहूँ. So what is the magnitude? आमे कौन लिखि परिबा? So BA माने magnetic field produced due to this a conductor is equal to mu 0 I by 2 pi t. इटी 2 pi d बोली कहीं हम लिखले, इटी एका कथा से d नहीं छे, d लिखले, r नहीं थे r लिखते. So this one, so magnetic field ये देखो mu 0 I by 2 pi a जेमते हम नहीं छे. So this is again at a perpendicular distance. ये जो हमें जो next नेले, so this एटा जदी हम देखिबा, जदी गोटे इमेजिन करिबा, so this এটা ଗୋଟେ perpendicular distance ଆମେ ଯଦି plane ଟାକୁ consider କରିବା, এটা ଗୋଟେ perpendicular distance ରେ ଆମେ ନଉଛେ. Okay, perpendicular axis ତାକୁ ଗୋଟେ draw କଲେ এই plane ରେ. So we are getting what is the direction of the magnetic field. ଆମେ ଯଦି right hand thumbs rule ପକେଇବା, so that will be towards let us consider this one will be downwards. तमे पकाओ जदी if we consider this one to be a ds element and ये जो this distance, that is let us consider this r. So हमारा जो राइट हैंड का 4 उंगली उस तरफ रखो एंड उसको क्रॉस प्रोडक्ट करके r के तरफ ले जाओ, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगा. ओके, सो दिस इज द माने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज डाउनवर्ड. ओके, तो यहाँ पे दिया गया है, सो बी ए ड्यू टू आई ए माने करंट इनसाइड द ए कंडक्टर. तापरे व्हाट इज द फोर्स? सो मैग्नेटिक फील्ड अगर है कहीं पे, सो डेफिनेटली देयर विल बी मैग्नेटिक फोर्स. ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे. क्या उसका ये क्या था फॉर्मूला? सो आई एल क्रॉस बी वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर. सो आई एल क्रॉस बी, this one. Okay, so far what we have studied in magnetism, आमे जोटा गोटे straight current carrying conductor नहीं थी हैला.
एटा जोटा माने फोर्स ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर हम जो कैलकुलेट करथिले केमति कैलकुलेट करथिले सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम करनथले गोटे मैग्नेटिक फील्ड भितरे गोटे व्हेनेवर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व so in that magnetic field if we put a current carrying conductor so what is the force exerted so that is I L prime cross B हमें कैलकुलेट करथिले सिमिलरली एठी कोन हला हमरो ए जो हमें जोटा पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर so देखो एठी गोटे मैग्नेटिक देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन and a current carrying conductor in this direction this B is the current carrying conductor so what is the force exerted so that will be FBA that is equal to IBL cross BA okay force exerted on B due to A बोली हमें कोई परिवार ओके सो FBA इठी कोन लिखिबा परिवा L cross B को हमें भांगिबा जदी so what is the direction of force what is the direction of force कहतली सब बळे राइट हैंड थंब रूल ओके भाई सपोज करंट सेंटर अडू जो हां करंट का डायरेक्शन अगर इस तरफ है और इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस तरफ है सो फोर्स विल बी अगेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन सब बळे हम कहै छी ओके सेठी भी वी कैन पुट this right hand thumbs rule so by putting this right hand thumbs rule you will find this force magnetic force is towards this a conductor so that means what is happening so same configuration if we calculate the magnetic FBA एमती जेमती calculate करिवे सेमती हमें FAB जदी calculate करिवा so that will be again equal to IA L cross B into B माने B magnetic field due to B जदी हमें ए करंट जोगु एठी केते मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होची देखिबा एबे तापर तार जो फोर्स कैलकुलेट करिवा so this force will be towards this direction so that means what is the conclusion what we are getting so two long parallel carrying currents exert forces on each other but that force is what attractive force so always whenever there are two parallel wires carrying current in the same direction they attract each other but whereas if we derive the parallel wires carrying currents in opposite directions they will repel each other এটা ଗୋଟେ basic idea এটা ସବୁବେଳେ মনে রাখিও so two parallel carrying currents in the whenever the currents are in same direction they attract each other whereas parallel carrying currents in opposite direction they repel each other opposite direction में यदि हमें polarity हमें देखता है so this current is in this direction so force will be in this direction our force will be this I mean they are getting repelled by each other okay so this is the basic formula so what will be the formula for the magnetic force माने what is the माने for the magnitude of the magnetic force I mean the direction कथा consider करले so I L cross B A एटी करले so B A जगह रे हमें I L B sin 90 so a value टा जदी पकेबा so that will be equal to this one so this is the formula so mu 0 L I A माने current in A conductor current in B conductor divided by 2 pi D where D is the distance between two conductors mu 0 L I A I B divided by 2 pi D okay so similarly एटा काली मंत्र मु एटा कहली so this is Ampere's law हम जेमति Biot-Savart law use कले so in order माने Ampere was the scientist who this माने gave this formula much before than Biot and Savart okay so ए जो Ampere's law actually gave the concept of माने paved the way for Biot-Savart law so however माने there are different types of physical situations in which माने we need to calculate this different formulas in a easy manner okay so co situation पे co law टा पड़िबो so that is माने that varies okay that we have to माने make a choice so what to put जेमति हमें Gauss law पढुथिले कोते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे Gauss law पढुथिले से सेम सिमिलर टाइप
एटा गोटे जिंस सो ए जो करंट कैरिंग लूप स्ट्रेट करंट कैरिंग लूप so suppose there is no current I equal to 0 in this a figure so I equal to 0 so there is just a conductor and conductor माने ता पई moving electrons किछि नांती so we can consider ए जो magnetic आमे गोटे magnetic compass जदि एठी रखिबा तार चारि पाखे कंडक्टर रो चारि पाखे जदि मैग्नेटिक कंपास रखिबा सो मैग्नेटिक कंपास रो जो नॉर्थ पोल सी सपोज दिस डायरेक्शन इज द नॉर्थ पोल का डायरेक्शन a compass needle direction is this direction so anywhere you put this compass this needle will show same north direction okay I जानछे सब north direction आडू arrow marker whenever this current is moving in this direction let us consider a switch on karthile and some current is moving in this conductor so you bring the compass to this point or this point or this point so you will definitely observe there is a deflection in the compass and we can experimentally prove it that whenever you circularly I mean jemti compass ro position change kari je chaliba similarly this arrow mark will form a complete ring jota ame dekhitile tike purpuru so that will be the mane for a current carrying conductor a magnetic field is produced circularly but that field is perpendicular to the plane of the conductor okay so empty gote ame magnetic deflection ame paiba so in that case we can derive we can define as by the as given by the ampere so that is the line integral of b dot ds एठी जदि हमें ds गोटे कंसीडर करिवा so let us consider this ds element so for every ds element the magnetic field is माने towards the same direction एठी जो ds element हमें consider कले so suppose हमें एठी गोटे ds ए जो ds element है due to this conductor हमें एठी consider कले so for every ds element this magnetic field is perpendicular to the perpendicular this magnetic field is parallel to the ds element hame eti consider kar okay so sethi pai eti hame kon karba dot product padiba so closed integration of this b dot ds is equal to mu 0 into current enclosed inside this ds element so for every ds element magnetic field ro direction jo pote ds ro direction madhya sei pote okay so say एथिपाई हमें जति जेतेले we consider this b dot ds or you can माने हमें जति e dot ds हमें consider करथिले Gauss law in electrostatics similarly एटा कोंती magnetostatics को जाय मु पढेबे आगु गुडे concept आसीबो कहबी so that is just remember this formula so b dot ds is equal to mu 0 I enclosed b dot ds माने कोन b ds cos theta you can say okay so it is cos theta is equal to 0 so in this case you can write like this that is mu 0 into I okay b dot ds is equal to mu 0 I and what is ring pi total ring pi what is total ds what is the integration of this whole path that is equal to circle माने say circle रो जो radius suppose the radius is r so this let be the center of this magnetic field ring okay so this distance is let us consider r so circumference of the circle माने the total path will be length of the path will be 2 pi r okay so mu 0 I divided by 2 pi r into 2 pi r so that we will get what mu 0 I so same jinso एठी हमें लिखिछि because this is the final version. So the line integral b dot ds around any closed path is equal to mu 0 I where I is the total continuous current passing through any surface bounded by the closed path. Taro definition hochi se Ampere's law. Okay, so b dot ds is equal to mu 0 I. So now we can consider let us consider a long straight wire of radius r ओके गोटे स्ट्रेट वायर तार दुईटा क्रॉस सेक्शन अछि गोटे तो हला स्ट्रेट एमती जाउची किंतु तार जदि हम गोटे क्रॉस सेक्शन गोटे सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन वी कैन कंसीडर सो
से जो क्रॉस सेक्शन रोचे रेडियस r and carries a steady current that is I0 that is uniformly distributed through the cross section of the wire. Okay, so calculate the magnetic field at a distance r from the center of the wire in the regions r greater than or equal to r and r small than r. Okay, ता माने से कौन कहूची ये जो क्रॉस सेक्शन बाहर magnetic field due to this current carrying wire cross section बाहर केते एवं क्रॉस सेक्शन भीतर केते. ओके, सो दैट इट इज आस्किंग माने ये अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो इसके बाहर में कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और अंदर में सपोज इस पॉइंट में लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट, सो ये अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है दैट वी हैव टू माने कैलकुलेट. ओके, so for the region outside this माने current carrying loop, so what will be the formula? What will be the formula? By symmetry mu 0 I by 4 pi r square. just आमे b dot ds आमे जति पकेवा तो b dot ds is equal to b whole integration of ds. अच्छा r येटा केते हबो integration of this ds will be equal to what 2 pi r simply. Okay, 2 pi r, so that will be equal to b into 2 pi r. Eta let us consider from this center of this cross section r माने distance टा होची r b into 2 pi r आमे लिखिबा. Okay, so b टा केते b रो value for this straight current carrying conductor b रो value केते mu 0 I 0 इठी I0 इठी नहीं छी हैला इठी देखो I0 mu 0 I0 by divided by केते रे 2 pi r 2 pi r 2 pi r into 2 pi r 2 pi r. So simply mu 0 I0 जोटा हमें just previously हमें टिके पूर्व एठी कैलकुलेट करथिले सेम जिंस हमें पाइले. That means हमें कोन एठी गोटे कोन कंक्लूजन पाइले Biot-Savart's law और Ampere's law यूज करबा is very easy in certain situations. Okay, Biot-Savart's law हमें जते कैलकुलेट करथिले सो केते देखो कष्ट करी हमें इंटीग्रेशन करी एटा गोटे स्ट्रेट कंडक्टर हमें ता पई गोटे मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट कैलकुलेट करथिले. ओके, हमु केते कष्ट करिया पड़तला हमें सिंपली एठी कोन पकेले हमें जानि छे जे सी जो मैग्नेटिक फील्ड टा क्रिएट करउची दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल माने तार चारि पटे गोटे सर्कल बनउची त हमें से सर्कल चारा जदी हमें बाहर कर दबा केते तार डायमीटर सेटु हमें वी कैन फाइंड. ओके, सो सर्कमफरेंस हमें पकेकी वी कैन फाइंड आउट mu 0 I0. So बाहर पोर्शन पाई वी कैलकुलेटेड दिस वन दैट इज mu 0 I0 और किंबा हमें कहि परिबा कोन so b into 2 pi r हमें कहि परिबा that is equal to mu 0 I0 और हमें एठी कोन कहले हमें एठी एक्चुअली एटा हम उल्टा कले so b dot ds is equal to b बाहर को नेलो तमे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds नेलो so that is equal to 2 pi r. So b into 2 pi r is equal to according to Ampere's law that is equal to mu 0 I. What is the current enclosed inside the this ring, so that is equal to mu 0 I0. So that means हमें b टा केते पाइले एठी that is mu 0 I0 divided by 2 pi r. हमें एबे उल्टा बाहर करछे हमें एठी कोन बाहर करतले Biot-Savart's law रे Biot-Savart's law रे हमें जेमति मैग्नेटिक फील्ड बाहर करतले हमको एठी मते सेही मैग्नेटिक फील्ड बाहर करिया पड़ुची. मैग्नेटिक फील्ड we don't know but we have just put this formula and mu 0 I0 is the formula. Okay, so इस केस से so मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा mu 0 I0 divided by 2 pi r for a straight current carrying conductor and outside the point we are trying to find the magnetic field. But अभी inside this cross section इस point में let us consider ये इस point में हमको calculate करना है. So since the current is uniform over this cross section, ये cross section में कोई भी जगह देख लो current is I. Okay, current is uniform over this cross section of the wire. So the fraction of the current enclosed by circle 2 must be equal to the ratio of the area enclosed by the circle 2 to the cross sectional area by माने ता अर्थ कोन हमें एठी कोन नहीं परिबा I divided by I0. यहाँ पे जो लिखा है स्टेटमेंट
So that I am just putting over writing the mathematics of the equation. Because the current is uniform over the cross section of the wire, the fraction of the current enclosed by circle 2 is जो fraction of current enclosed by circle 2 must be equal to the ratio of the area enclosed by the circle 2 to the cross sectional area pi r square of the wire. A wire the cross sectional area and a जो element जेतिकी we are considering, so that is equal to I divided by I0 is equal to pi r square divided by pi r square, capital R square. Okay. So एठी हमें कौन पकेबा is equal to what is the current, what is the fraction of current in this एतिक area रे केते fraction of current we are trying to find out. That is equal to what, r square divided by r square into I0 pi कटि गले, it is just cross multiplication कर देली हैला. So हमें एबे एम्पियर्स लॉ पकेबा b dot ds 2 pi एठी कोन पडियो, that is equal to capital R पडियो. Sorry, capital R नो सब small r एठी पकेबा हमें for the timing r prime हमें नेबा. Okay, जो distance that is equal to r prime, let us consider. So 2 pi r is equal to what, b into 2 pi r prime is equal to there. That is equal to mu 0 I हला. किंतु एठी हमें जो I जगह रे कोन पकेबा, ए फार्मूला टा पकेबा. ओके, सो हमें कोन नबा mu 0 r square divided by r square into I0 हला. तो finally you will get ये जो inside point में you will get, finally you will get P is equal to mu 0 I0 divided by 2 pi capital R square into small r. तो मेरे को r prime नहीं हो कि r नहीं हो, से तरह लेन देन नहीं, and I mean r नीचे. So anyway, so mu 0 I0 divided by 2 pi capital R square into small r. Okay, small r is the distance from the point of consideration to the center. Suppose एटा होची r हला. तो एटी कंफ्यूज हो बोली मु r prime नेतिली. So anyway तमे तको r consider करो हला. So mu 0 I0 divided by 2 pi r square r. ता अर्थ कोन हैला. So outside point पई हमें जोटा बाहर कले, outside point के लिए b is equal to mu 0 I0 divided by 2 pi r, but inside point पई हमको ये कौन मिला है, mu 0 I0 by 2 pi capital R square, माने that is the ये जो कौन radius of this whole cross section into R. So तार ग्राफ टा केमती होबो, इठी रुआ और इठी ऑलरेडी मु करी छी देई छी. So एटा तार इक्वेशन जो सेकंड इनसाइड पॉइंट में हैला, से तार इंटीग्रेशन इशू हे छी. सेम जिंस मु जोडा लिखितली इठी लिखै छी हैला. So this is for r less than r, माने वो जो क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर एक पॉइंट में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसका मतलब क्या हुआ, एट द सेंटर ऑफ दिस माने क्रॉस सेक्शन, center of this cross section, current carrying cross section, what is the magnetic field produced? What is the magnetic field produced at the center of the cross section? At the center r is equal to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. At the center this small r, माने पॉइंट भी वही पे है, सेंटर भी वही पे है, तो r क्या हो जाएगा, 0. तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 0. Okay, so you see this graph. So up to this r is equal to capital R, माने radius of the cross section, माने surface of the cross section के माने
what is the magnetic field from center to surface of the cross section अगर हमें हम की यदि पचारिबो, so that increases linearly with respect to the distance, but after this point एक क्रॉस सेक्शन रू बाहर एक करंट कैरिंग क्रॉस सेक्शन से आउटसाइड अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट 1 by r. कहीं कि हमें जो प्रथम इक्वेशन टा कोन पाइथिले म्यू 0 i 0 डिवाइडेड बाय 2 pi r, माने that is inversely dependent upon 1 by r, but here it is directly proportional to r. So that increases linearly and this decreases exponentially. बुझेला ए ग्राफ टा आसीथिबो, ए ग्राफ टा काहेर को माने ये को रिप्रेजेंट करछ पचारिबो. हेला समझता हूं हेला. श्वेता जी समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। और किसको समझ में नहीं आया बोलो. भुवनेश्वरी यस सर। रेडी तो सबू? यस सर। वेरी गुड. प्राणायामी सब हाँ शाश्वती पंडा देखिए कौन करुची. शाश्वती पंडा यस सर। बुझी होची ना नहीं? हाँ सर बुझी होच। मेरी दुख रे कहूच. अच्छा बापा खाए को जाबू. हां खाया को दियो तमे से बोले. हां एटा तो प्रॉब्लम गोटे काली सॉल्व करथिले छाड़. हां तापरे गोटे हम कोन करथिले, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कर्व्ड वायर सेगमेंट हम काली कैलकुलेट करथिले. ए पॉइंट मन करे एमती गोटे कर्व्ड वायर अछि, एठी करंट आसुची, यहाँ पे करंट आ रहा है, फिर करंट एग्जिट हो रहा है. सो उसके लिए जो कैलकुलेट किए थे वो कितना था, वो फॉर्मूला क्या है? म्यू 0 by 4 pi r square into theta बा म्यू 0 i हाँ तो बंद करे तोर साउंड होची. म्यू 0 i by 4 pi r into थीटा. कहीं कि ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है ये इस तरफ है, तो उसका जो ds है इसी तरफ होगा ids. अच्छा उसका जो r है माने डिस्टेंस एट दिस o, we are trying to find out what is the magnetic field at this o. तो उसका जो माने इस पॉइंट से यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस सपोज लेट अस कंसीडर r, उसका जो डायरेक्शन है भी r क्या. सो i ds क्रॉस r जो हमें कंसीडर करते हैं, व्हाट इज द ds क्रॉस r. एटी कोन है जो since the angle is in parallel माने 0 डिग्री, so ds क्रॉस r equal to 0. सिमिलरली इस डायरेक्शन में ये अगर छोटा सा एलिमेंट हम लोग देखेंगे, सो ये हो गया ये डायरेक्शन में, ये r का डायरेक्शन हो गया r क्या ऐसे डायरेक्शन में, सो 180 डिग्री सेटा पुनी हे जो कोन 0 हला sin 180 डिग्री दैट विल बी 0. सो ये दोनों एलिमेंट के लिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट दैट इज 0. सो वी कैन जस्ट कंसीडर अबाउट दिस एलिमेंट, ये जो सेमी सर्कुलर आर्क वालिया हेची, so we can consider about just this element. So say element पई हम जदि कैलकुलेट करिबा हमरो ds रो डायरेक्शन ता को पड़े जीवो ए पड़े जीवो गोटे छोटो एलिमेंट हम कंसीडर करिबा. बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ r, तर डिस्टेंस रो यूनिट वेक्टर r के आपरो कोन होइबो ए पड़े जीवो. सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, त माने एटी कोन होइबो, सो म्यू 0 i by 4 pi ds by r square हमें जदि पकेबा, सो ताकू इंटीग्रेट करिबा हला. सो दैट इज इक्वल टू ए जो ए टोटल डिस्टेंस केते हो s इज इक्वल टू r थीटा ए सब जो हम जानि छे. हां तो सेटा को हम जदि पकेबा, सो दैट विल बी इक्वल टू
mu 0 I by 4 pi r into theta. ये theta टा केते r square r square हाँ mu 0 I by 4 pi r square theta हैला तापरे हमें गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करतले फॉर a circular wire loop of radius r उनका radius होची r is carrying a current I. So what is the magnitude of the magnetic field at the center? What is the magnetic magnitude? So B is equal to mu 0 I divided by 4 pi r square ds integration करिया. So equal to mu 0 I by 4 pi r square. ये जो integration of ds टाइप हमें जो नहीं थे थीटा. So mu 0 I by 4 pi r square theta. But theta type for the whole circle कौन है जो 2 pi mu 0 I divided by 4 pi r square into what 2 pi 2 pi r 2 pi r. So 2 pi r कले हमें कौन पाइबा finally. So mu 0 I divided by 2 capital हैला. तो जिनछटा कोन हैला एठी करंट कैरिंग लूप ता होची सर्कल. Don't get confused. This current carrying loop is a circular loop. So we are trying to find out the magnetic field at the center of this current carrying loop. But previously हमें जोटा calculate करले एटा कोन straight wire एटा गोटे straight wire. तार गोटे क्रॉस सेक्शन हमें कंसीडर करले से क्रॉस सेक्शन माने से करंट कैरिंग क्रॉस सेक्शन भीतरे इनसाइड दिस क्रॉस सेक्शन करंट कैरिंग क्रॉस सेक्शन तार सेंटर रे केते दैट वी आर कैलकुलेटिंग. Okay, so that is the basic difference. Tapare we calculated yesterday this magnetic field on the axis of a circular current carrying loop. So we consider this type of loop in the chabbering type of current is entering and moving like this and current is getting exiting. Okay, so say case by a formula. So mu 0 I r square divided by 2x square plus r square divided by 3 by 2, where x is the distance from the center of the circular loop to the point of consideration. The P we are trying to find out the magnetic field. So x is the distance and r is the radius of this circular loop. So at the center of this loop, what we can put here, x square is equal, mane x is equal to 0. We can write x is equal to 0. Mane center achi, this point P is placed at center, that means x is equal to 0. So we can neglect this x square term. So finally we can get r square to the power 3 by 2. Mane kon 2 cancel. So r cube rahibo. Okay, r cube it upare r square rahichi cancel hegala. So mu 0 I by 2 r at the center of the circular current loop. Okay, जो टाइप just find out कॉले ठीक है पूरा this one mu 0 I by 2 r we calculate same answer. But whenever we are considering suppose this distance is very large than the radius of this loop. So this x distance, so let us consider this x is very larger than the radius of the loop. Radius is very small current carrying loop, circular loop. So we can neglect this r square term in the denominator. So we can find out this formula, that is nearly equal to mu 0 I r square divided by 2x cube. Mu 0 I r square divided by 2x cube. तापर हमें कौन कंसीडर करते हैं, this mu is what mu 0 by 2 एठी रहले हैला x cube जगह रे x cube रहले. So मु एठी mu ए जो टर्म रे mu 0 by 2 एठी बाहर कर दियो, mu 0 by 2 x cube एठी बाहर कर दियो. So बाकी कौन रहला I r square by pi. Okay,
I r square by pi is equal to mu taku nechi mu. So this mu is called magnetic moment. Magnetic moment. जेमती हमें dipole moment हमें calculate करथले electrostatics रे. So similar concept, physical concept. This is called magnetic moment. Always try to माने correlate with that previous chapter. सेठी कोन होतला एठी कोन होची. सेठी हमें जदी नौतले कोन चार्ज q नौतले एठी हमें करंट सब बोले नबा. काहे कि मूविंग चार्ज कथा आसीगला. हला. So this is called magnetic moment. तापरे हमें देखितले. So this will be, suppose there is a circular current carrying loop. Okay, so current is moving in this direction. So what is the magnetic field produced by this current carrying loop? Just like this. A point, a good a point रे हमें यदि consider करें. So this turn, ये जो turn है लड़को, this point can be considered as a straight line. So गोटे straight line पे कौन तार magnetic field टा केमती perpendicular to the plane of paper. देखो माने perpendicular to the that segment. तो तार ए कड़ गुडा करे केमती magnetic field टा distribution होची. जेतले दूरी दूरी जाउचे, so magnetic field टा केमती distribute होची. So this is nothing but the magnetic field lines. This is just like a bar magnet. जेमती गोटे north pole और south pole जो थिला आमे तार magnetic field lines टा को जेमती आमे देखि पाउतले. Similarly, a current carrying loop, a circular current carrying loop behaves like a bar magnet. Okay, and it produces magnetic field similar or analogous to the magnetic field lines as produced by a bar magnet having north pole and south. This is also one of the important questions. Bar magnet सहित आमे काहा को समान नहीं परिबा. गोटे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को हम बार मैग्नेट भलिया कंसीडर करथि. So solenoids and toroids. So there are two applications of this circular current carrying loop and straight conductor. ये सब जो हमें पढ़िले. So ताको जदि हमें physical world रे if we try to apply such kind of phenomena. So हमें बहुत गुडे डिवाइस थाए जोठी कि हमको सोलोनॉइड टॉरॉइड ये सब दरकार पड़े application point of view रू. So an ideal solenoid is approached when the turns are closely spaced. ये देखो केमती टर्न सब हेची, वायर माने सब केमती टर्न नहीं चंती, closely spaced, and the length is much greater than the radius of the turn. So let us consider it is a schematic diagram. So let us, this is the radius of the turn, but this length माने बहुत लंबा गोटे एमती सर्कल हेकरी गोटे गुडा है तो वायर माने ता भीतर जति करंट पास करथबो. So that we can consider like a solenoid. We can say it is a solenoid. Okay, so in this case the external field is zero and the internal field is uniform over a great volume. Okay, so for points very close to a turn, जेमती मु कहतली, the wire behaves magnetically almost like a long straight wire. गोटे टर्न ए जगह रे मन कर नबा ए जगह रे. So there is this magnetic माने it can be considered like a straight long wire, and therefore the lines are almost concentric circles. If we imagine such kind of माने devices, तो हमें जो डॉट 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 जोटा नइचे. So this is current carrying माने solenoid गुडा generally एमती देखा जानी है. एटा गोटे just schematic diagram, but solenoid तार जो एटा मन कर solenoid तार magnetic field गुडा को केमती हमें सब बळे जानछे ना, गोटे particular straight conductor पई तार magnetic field concentric हेगरी चारिटा स्पेस रे डिस्ट्रीब्यूट हेतु. So similarly देखो को पॉइंट रे स्ट्रेट वायर एमती स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होची, को पॉइंट रे एमती सर्कुलर concentric ring create होची. And suppose we try to find out what is the magnetic field strength at this point P. So we can calculate this by putting this formula, that is mu 0 I n, where n is the number of turns. Simple formula, number of turns of a solenoid.
So it is one kind of representation of a solenoid. So this figure represents the magnetic field lines for a real solenoid of infinite length. The infinite length is finite length. The field is very strong and uniform at interior points. The interior points solenoid interior point by magnetic field are बहुत strong, but relatively weak at these larger points. Consider करूँ. So mu 0 In is the strength of the magnetic field. You can find out. Acha, how does it? What is the dimension of this mu 0? Magnetic permeability. हमें Biot-Savart's law जेतेले पढ़िले. Whenever we read this, what Biot-Savart's law and all this. So from this equation, suppose तुमको ये question रे आसीथिबो. So B is equal to mu 0 I. So magnetic field due to a magnetic field at a point P due to a current carrying wire can be defined by Biot-Savart's law, that is B is equal to mu 0 I by 4 pi integration of ds cross r by r square. ऐसे एक equation दिया होगा. So please find out or try to find out the dimension of this mu 0, that is magnetic permeability. So इस equation में हम लोगों को simplify करना ये आसान नहीं. So B यहाँ पे है, पहले magnetic field का dimension लिखो, उसको इस साइड में I को ये करो, यहाँ पे पर इंटीग्रेशन जैसा कुछ चीज रह गया. So इसको फिर कैसे dimension लिखेंगे इसका. So that makes our life difficult. But ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି force, gravitational force हो किंबा nuclear force हो किंबा जेकोनोसी electrostatic force हो. What is the unit of force? Newton. What is the dimension of force? Always same. ହେଲା? Always same. That is m1 l1 क्या? t minus 1. T minus 1 not minus 2. Minus 1. Acceleration length divided by time square. Okay. So m1 l1 t minus 2. Similarly, magnetic field तमे यही formula पकेगी बाहर करो कि जेकोनोसी formula पकेगी बाहर करो. So magnetic field का dimension same रहेगा, magnetic permeability का dimension same रहेगा. So इस केस में, so this is the most simplest formula for the magnetic field. n is a constant, हम लोगों को लेना देना नहीं. 50 टर्न्स 100 टर्न्स n is a constant. mu 0 का मैंने क्या पूछा, डायमेंशन कितना है. So magnetic field का डायमेंशन मालूम है, डिवाइडेड बाय करंट का डायमेंशन क्या है, एम्पियर. So ये जितना होगा बस a इनवर्स. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालेंगे. m1 l1 t minus 2. B is equal to what? F is equal to what? Q VB. बोला m1 l1 t minus 2 होची लेफ्ट साइड रहला. ताकू जदी हमें डिवाइड करबा q माने कोन c कूलम एमती नहीं परिबा तो मैं एम्पियर फॉर्म में नहीं परिबा. एम्पियर फॉर्म में नेले कोन होबो, व्हाट इज चार्ज, करंट फ्लोइंग. चार्ज ता केते रे I into t ना डिवाइडेड बाय t into t. श्योर. Yes. I into t हला. सो एम्पियर I टारो यूनिट कोन, एम्पियर. t रो यूनिट कोन, टाइम हला. अच्छा वेलोसिटी रो यूनिट कोन, m0 l1 t minus 1. m0 छाड़ा l1 t minus 2 t minus t minus 1. t minus 1.
हाँ L1 T minus 1 so एटा को एबे हम करियो ऊपर साइड को ना so how to find out that is the माने कोन हमें b रो हमें बाहर पूछे so f divided by q v जदी करबा हमें b रो डायमेंशन पाइबा तो b रो डायमेंशन कोन को जदी को so m1 L1 L1 कटि गले ये कटि गले -1 हे जो 1 -1 हे जो 0 हे अच्छा T2 एटी अछि एटी गोटे T1 अछि ये कटि गला एटा हे गला T1 किबा T1 T -1 ये कटि गले हैला तो ऊपर रहिला कोन T2 M1 T2 A कोन -1 A -1 -1 M1 T2 A -1 एटी गोटे A -1 ऑलरेडी अछि so M1 T2 A -2 so this will be your magnetic moment का dimension sorry magnetic permeability का dimension इटा हला तमरो magnetic field रो dimension इटा हला magnetic permeability जदि कोन कटाकट रे भूल हिथिबो देखिबो घोषिवा दरकार नै नीचे फाइंड आउट करिया पे चेष्टा घोषिले मन रहइबोनी सब जिंस हला डोंट बाय हार्ट थिंग्स जो जो अपने आप को सोच रहे हो कि मेरे जिंदगी में मैं मतलब कभी हो ही नहीं पाएगा मेरे से पढ़ाई उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि तुम ये करो उसको बाय हार्ट करो नहीं तो इफ यू आर जस्ट माने एन एवरेज स्टूडेंट यू कैन कंसीडर दिस टाइप ऑफ माने इक्वेशंस केमती हम फाइंड आउट कर परिबा न घोषी कि हम मन रखिबानी मु कोन एटा मन रखिछि ना मन रहिबो मन रखिछि मते मन रहिबो 4 दिन पर भूल दियो हला तले एमती सिंपल फार्मूला पकई सबले डायमेंशन बाहर करियो गोटे दीटा क्वेश्चन जहा हेले गोटे दीटा क्वेश्चन को जे कोनोसी एंट्रेंस रे पड़थियो से गोटे दीटा तो हमें कर देले हमर ए जो OUAT एंट्रेंस हला तीनटा डायमेंशन ऊपर क्वेश्चन पड़तला 3 मार्क तम पाई गेलो सेतु हला बहुत इजी जिंस किछि नाही किंतु हमें जदी जानि बानी केमती बाहर करा दिबो तापर एठी देखो गोटे प्रॉब्लम देखिबा What is Biot? Solenoid. Solenoid का फॉर्मूला क्या है हमने बोले mu 0 equal to mu not Ni. ni. एठी लेंथ दो d दो सेतरे हमर कोन लेन देन अछि that means what conclusion we are getting the magnetic field at a point due to a solenoid the magnetic field at a point due to a solenoid is independent of the length and diameter of the solenoid मो कथरा बुझला था बट आउटसाइड रे जदि हम कंसीडर करबा सोलोनॉइड में सेटा जीरो बाहरिबो एटा टिके उल्टा हे जीवो मो कहबी नेक्स्ट क्लास रे तक कहबी हला सो आउटसाइड पॉइंट में सेटा जीरो हे जीवो जोठी हमर इनसाइड पॉइंट में सोलोनॉइड में we can find out by putting this formula so mu 0 is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 850 tons यहाँ पे given है 850 tons into what is the current flowing 5.57 ampere 5.57 ampere Hala, you can find out the value so just calculate it okay so magnetic field due to a solenoid is independent or does not depend on the diameter of the windings जो
ring ହେଇକି ଗୁଡା ହେଇଛି, so it is independent of the winding ହେଲା। So this is the basic concept of solenoid. So I think the time is over.